कर्मयोग, then ethics, values, stress management, and various tools. How to minimize this stress with the help of various spiritual tools. Some breathing kriyas, some one or two asanas to minimize stress, and after that there will be 10 minutes question answer session, and you will have to give feedback. One questionnaire is sent to your sir Ghaugave sir. I have sent one questionnaire bank. So dear friends, we will start. My complete introduction has been given. Again I will repeat. क्या होता है, कभी कभी जो लोग लेट आते हैं उनके लिए बताना आवश्यक होता है. आई एम रिटायर्ड प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, having 37 years experience after BA and MTech from VNIT Nagpur. Okay, best debater, best all-rounder, best recipient of state level energy conservation award. Madam has already given my complete introduction, so we'll start. Dear friends, अरे भाई कोई तो भी आ जाओ, दिखता नहीं मुझे कोई. एक दो लोग मुझे दिखना चाहिए. कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर, कोई भी नहीं दिख रहा मुझे. हेलो नेहा. यस सर, यस सर. ओके ओके, यस सर. रिस्पॉन्स देने के लिए, नहीं तो मुझे समझेगा नहीं कि ओ जैसे क्लास में लड़के मुझे नहीं आती है. So we'll start. Dear friends, whenever we start any seminar, कोई भी चीज स्टार्ट करने के पहले, so that seminar or workshop we have to start with prayer. What happens? Whenever we pray, it has been technically approved that whenever we pray, that frequency of our prayer goes up and blessings come down. So it is law of attraction explained by Mr. Murphy. So dear friends, जब भी आपको कोई भी अच्छा काम करना है, हम सभी काम अच्छे ही करते हैं, कोई भी काम बुरा नहीं करते हैं. तो जब कोई whenever we want to do any good work, सेमिनार, वर्कशॉप, कहाँ भी आपको प्रेजेंटेशन देना है, so you have to start with prayer. तो आज के लिए हमने एक प्रेयर, बहुत सारे भगवान है हमारे, ओके, जिनके प्रति हमारी फेथ है. सो नाउ विल स्टार्ट आवर प्रेयर विथ मनोजवम मार्तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वारयुत मुख्यम श्रीराम दूतम चरणम प्रपद्ये. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बिकॉज today's seminar is related with stress management, ethics, values, karma yoga, breathing exercises, and yoga. That is why we have selected Lord Hanuman ji as today's God. So we'll start. Dosto, again, now we are ready. What is our aim in life? First, we'll try to understand what for we are doing all these things. What is our aim in life? Everybody's aim in life is to become successful in life. Everybody knows. Everybody knows because we are intellectual engineers. हम में से सभी लोग होशियार हैं. शायद मैं सबसे एजेड हूँ इस ग्रुप में, तो सभी लोग होशियार हैं. So everybody knows basic definition of success. Till now, everyone was saying, "Yo, yaar, I want to become successful in life." But nowadays, everyone started adding that I want to become successful along with happiness. If you are successful, yes, I am very successful, I am so and so, I am professor, I am so. But if you are not happy, you are gone. So dear friends, happiness is to be added with success. And again, suppose I am successful. Yes, I am successful professor, electrical engineering professor. All the time I am smiling, I am happy. But I am not maintaining my good health. That means it will not be possible for me to survive up to 100 years. Then my success is meaningless. So, dear friends, whenever you say that I want to become successful, all the time you mention that, yes, I want to become successful along with happiness and along with overall swasthya. So, dear friends, it is very, very important. You have to add these three things along with that success. So now, now you know basic definition of success. सभी को मालूम है यार, पढ़ाई करना है, आगे जाना है, अच्छा पढ़ाना है. Now, दोस्तों, even if we know the basic definition of success, after that, कोई भी चीज करने के पहले we have to do our SWOT analysis. क्या होता है? Unless and until no, because all these parameters, strain, ethics, value, this, that, sorrow, dukkha,
these are related with our improper understanding of our SWOT analysis. So dear friends, we have to do our SWOT analysis first. Now, what is SWOT analysis? Basically, strengths, weakness, opportunity, threats. Who am I? What for I am here? What are my duties? What are my boundaries? What are my limitations? मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता हूं, कौन सी चीज मुझे पॉसिबल है या कौन सी चीज मुझे पॉसिबल नहीं. यदि आपको इस सब बातों का पूरा नॉलेज है, देन हम जिंदगी में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, हैप्पी भी रह सकते हैं और उसके बाद ओवरऑल स्वास्थ्य भी मेंटेन कर सकते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, नाउ वी ऑल आर इंजीनियर्स, वी आर टैलेंटेड पर्सन्स, we know about our normal SWOT analysis. Now, along with that, spirituality, that is spiritually, we should be able to know our boundaries. Dear friends, we are made from various parameters. पृथ्वी, जल, ख्याल रखिए, I will ask some questions during that question answer session. जितना याद रहता है उतना ख्याल रखिए. Okay? We are made from पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाथ, पाव, वाणी, उपस्थ, गुदा, नाक, कान, आंखें, जीभ, त्वचा, स्पर्श, रूप, शब्द, रस, गंध, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. तालियां बजा सकते हो आप मैडम, तालियां बजा सकते हो आप. Now, dear friends, our body and we are made from so many parameters, internal parameters. That means God has designed us with all these parameters. So now, what is the inference? यहां से हमें क्या इन्फरेंस निकालना है? तो एक कि भैया आई एम डिफरेंट. मैडम आप दिख नहीं रहे हो, एक जन कोई तो भी दिखना चाहिए मुझे. हाँ, कोई तो मुझे वीडियो पे आना चाहिए. एक जन मुझे दिखते रहना चाहिए, तो फिर क्लास में पढ़ाने की मजा नहीं आती. ऐसा लगता है कि लड़के सोए हैं. एक यू आर रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट क्लास, स्माइलिंग फेस, तो मुझे लगता है कि लड़कों को समझ रहा है, एवरीवन इज स्माइलिंग. ये तो सब लड़के सो रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं. ऐसा नहीं होना चाहिए. So, dear friends, why we have discussed all these parameters? Because once we understand all these parameters, and from this, what is your inference? I am different, you are different, he is different, they are different. So whenever everyone on this earth is different, then there is no concept of comparison. So जिंदगी में कंपैरिजन नहीं है, स्पर्धा नहीं है, तो 99% प्रॉब्लम चले गए हैं. बिकॉज 99% प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दिस स्पर्धा एंड कंपैरिजन एंड कंपटीशन. अरे यार उसके पास वो है, अरे यार मेरे पास नहीं है, अरे यार वो ऐसा करता है, अरे यार उसका प्रमोशन हो गया है, अरे बट अदर पैरामीटर्स आर वेरी डिफरेंट. सो दोस्तों, you start your complete philosophy from this base that everyone is different. God has created everyone for doing different things. So I am different, I am big boss, I am different, I am different, he is different, she is different, they are different, and मैं भगवान ने भेजी हुई एक स्पेशल आइडेंटिटी हूँ. So now our theory will start from this कि I am different, there is no comparison, there is no competition. Okay, we'll start. दोस्तों, अभी आपको एक सक्सेस की डेफिनेशन मालूम होगी. You know your boundaries, you know your limitations, you know your restrictions, you know your habits, you know your orientation, and you know everything about that. Now, from that, you have to prepare all the time your mission statement. If you are ready,
all the time with you, with your mission statement, so it is very difficult for you to behave properly. अब जैसा दोस्तों, अरे you can change your mission statement, बार बार आप चेंज कर सकते हो. So now considering all these parameters, मैंने अपना मिशन स्टेटमेंट क्या डिजाइन किया है, आई विल डिस्कस. आई हैव डिसाइडेड माय मिशन स्टेटमेंट. अब मेरा मिशन स्टेटमेंट क्या है भाई? एक मिनट. हाँ, पहले मेरा अलग था, बदलते गया, लेकिन एट दिस एज माय मिशन स्टेटमेंट इज आई वांट टू बिकम टेक्नो स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरियल skillful human being up to 100 years with excellent body mass index and with excellent HR along with प्रज्ञा, शील, करुणा, प्रेम एंड सद्भावना. अब दोस्तों क्या होता है, when you remember your mission statement, तो बार बार जब आपको मिशन स्टेटमेंट याद आता है, तो कोई भी आप गलत चीज करते हो, जैसे मैं इफ आई एम हैविंग एनी बैड हैबिट, तो मुझे याद आएगा अरे मुझे 100 साल जीना है. फिर मैं किसको गुस्सा कर रहा हूँ, डुशुम कर रहा हूँ, तो मुझे एकदम से याद आएगा ओ यार आई हैव टू मेंटेन गुड एचआर. मुझे एकदम से कहीं क्रोध आ रहा है, हाँ, देख लेंगे, हाँ हु, देन आई विल रिमेंबर दैट प्रज्ञा, शील, करुणा, प्रेम, सद्भावना. सो दोस्तों, फिर मुझे कभी पढ़ने का दिल नहीं होता है, तो आई एम बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मैं पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहना चाहिए. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बिकम एक्सलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. स्पिरिचुअल मीन्स मुझे सब लोगों के साथ रहना है. ओके. एंटरप्रेन्योरियल मीन्स मुझे जिंदा रहना है. सो आई हैव टू डेवलप सम स्किल एंड दैट इज द बेसिक फिलोसफी. सो दोस्तों, आप भी एक काम कीजिए, अपना एक सक्सेस की डेफिनेशन लिखिए. आफ्टर दैट यू डू योर स्वॉट एनालिसिस, एक कॉपी ले लीजिए. आफ्टर दैट यू प्रिपेयर योर मिशन स्टेटमेंट. और ये सब होने के बाद नाउ वी आर रेडी विथ ऑल इक्विपमेंट्स. अभी हम रणांगण में जाने के लिए तैयार है. विथ ऑल इक्विपमेंट्स के साथ हम तैयार है. अब दोस्तों, उसके बाद अभी हम तैयार हैं, उसके बाद हम अपना काम कर रहे हैं. वेर एवर यू आर वर्किंग. ओके. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कर्मयोग. अब बेसिकली व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ कर्मयोग? वी नो वेरियस डेफिनेशंस ऑफ कर्मयोग, कि हमने काम करना चाहिए. एक कर्मयोग की अच्छी डेफिनेशन है, अच्छा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त कर्मणि. कि दोस्तों, यू ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट इन योर असाइन्ड वर्क. आपको जो काम दिया है, जिस काम के प्रति आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, उस काम के प्रति आप मन से काम कीजिए. कोई भी नहीं बोलता है, नो वन इज एक्सपेक्टिंग दैट आपने बहुत कुछ काम करना चाहिए. whatever maximum potential or capacity you are having, you have to perform your duties as per the requirement or as per your limitations. ऐसा नहीं कि विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर फ्रूट, मीन्स भाई मुझे पगार नहीं मिलना चाहिए, मुझे पगार नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करूंगी या करूंगा, ऐसा नहीं. और दैट इज देयर. बट मेरा काम जो है पढ़ाना, तो मुझे तन मन धन से पढ़ाना है, अच्छी नोट्स निकाल के पढ़ाना है, और मैंने खुद पढ़ना है और लड़कों को पढ़ाना है. सो जैसे आपको बताया कि टुमारो यू हैव टू एंगेज क्लास रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर, तो अच्छे से पढ़ के जाना है कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर्स पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. सिस्टमेटिक आपको पढ़ाना है. या ऐसा नहीं चलो भाई लिखो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, आप डिक्टेट कर रहे हैं, लड़का लिख रहा, उसको भी समझ नहीं रहा, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो वॉट एवर वर्क हैज बीन असाइन टू यू शुड बी परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो लिमिटेशंस है, आपकी जो बाउंड्री है, और आप अपना मन लगा के, मन बुद्धि अहंकार और चित्त लगा के वो काम करना चाहिए. दैट इज द बेसिक फिलोसफी ऑफ कर्मयोग. अब काम करते करते व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? यार मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, डोंट बॉदर अबाउट दैट. अच्छा यदि आप काम करते हो लाइफ लॉन्ग, तो आपको रिकॉग्निशन कभी ना कभी अच्छे आदमी करके आपको मिलता है. अच्छा प्रोफेसर,
अच्छा टीचर, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने देखा है कि दूसरी के, तीसरी के, चौथी के टीचर हमें अभी भी याद रहते हैं, हमारे लड़के अभी भी हमें याद करते हैं। सो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ कर्मयोग। अभी मेरे ख्याल से आप कुछ लोग यंग भी होंगे, दिख रहे हैं मेरे ख्याल से मैडम के चेहरे से वगैरह, सभी लोग यंग है, मैं ही थोड़ा सा सीनियर दिख रहा हूँ। तो एक काम कीजिए, डोंट बॉदर अबाउट योर प्रमोशन, इफ योर क्वालिटीज आर गुड ऑटोमेटिकली ऑल दिस थिंग्स विल बी शावरिंग ऑन यू। ओनली थिंग इज दैट खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आपसे पूछे बोल तुझे उतारूं कैसे नीचे, दैट कॉन्फिडेंस यू हैव टू डेवलप। सो दोस्तों, कर्मयोगी बनो। अब एक कभी कभी हमें प्रॉब्लम आता है कि मैं बहुत ही कर्मयोगी हूँ सर, आई एम वेरी पंक्चुअल, आई एम गोइंग टू कॉलेज एट 10 AM, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ सम फैक्टर्स आर रिलेटेड टू योर कर्मयोग। अब एक कंसेप्ट ऑफ इथिक्स, कंसेप्ट ऑफ इथिक्स एंड वैल्यूज। अब दोस्तों, आप काम कर रहे हो, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा इथिक्स के बारे में, और लास्ट लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन पूछूंगा, उसमें हम विल डिस्कस एवरीथिंग। अब दोस्तों, यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, सो यू आर कर्मयोगी, यू आर ड्यूटी बाउंड। आप, आपका कॉलेज है 10 बजे, आप रेगुलर 10 बजे आते हो, ओके परफेक्ट। व्हाट आर इथिक्स? इथिक्स एंड संस्कार्स, these are some written rules and some unwritten rules जो हमें सालों से चलते आए हैं। सो इथिक्स मीन्स संस्कार और वैल्यूज के कारण हमारे समाज में तो चलते आते, सालों से चल रहे, सालों से चल रहे हैं, एंड दीज आर कॉल्ड इथिक्स, वैल्यू इथिक्स। अब यू आर अटेंडिंग योर कॉलेज रेगुलरली एट 10 AM, आपके कॉलेज का टाइमिंग है 10 बजे, आप रेगुलर कॉलेज को 10 बजे जा रहे हैं, यू आर अटेंडिंग योर कॉलेज रेगुलरली एट 10 AM, एंड दिस इज योर ड्यूटी इथिक्स, वेदर इट इज रिटन और नॉट रिटन। यदि आपको कॉलेज का टाइमिंग मालूम है कि मुझे 10 बजे जाना है, दिस आर योर स्टैंडर्ड टाइमिंग्स, नहीं है तो 10 जो भी है, वॉट इट मे बी। सो वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी एज पर नॉर्म्स, भाई 10 बजे बुलाया है, चलो यार 10 बजे जाना है, 10 तक चलता है, हमारा जो थंब है चलता है। सो दैट इज योर ड्यूटी इथिक्स। ड्यूटी इथिक्स मीन्स जो भी आपके स्टैंडर्ड नॉर्म्स है और कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है तो आप फॉलो कर रहे, दैट इज योर ड्यूटी इथिक्स। 5 बजे तक काम कर रहे, कोरोना है, जल्दी जा रहे, दैट इज अनदर थिंग। सो ड्यूटी इथिक्स। सेकंड इथिक्स, सपोज यू आर डेली गोइंग टू कॉलेज एट 10:30 AM और एक दिन आप जा रहे हो और बीच में एक्सीडेंट हुआ है, दूसरों का एक्सीडेंट हुआ है और कोई पेशेंट है एंड दैट पेशेंट रिक्वायर्स योर हेल्प, उसको आपको दवाखाना लेके जाना है, तो दैट टाइम योर माइंड विल डिसाइड, यू डिसीजन लेगा आपका माइंड, एंड दैट टाइम you are taking that patient to hospital instead of going to your duty, then it is called consequential ethics। भाई जो दोनों ड्यूटीज में आपका जो इंपॉर्टेंस है, जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी, तो भाई मेरी प्रायोरिटी अभी क्या है, कॉलेज में जाना है या वो पेशेंट की जान बचाना है, उस टाइम whenever you are giving priority to saving that patient, it is your consequential ethics। अब ये कॉन्सिक्वेंशियल इथिक्स है कि डेली भाई मुझे रास्ते में सर पेशेंट मिला, कल एक गरीब आदमी पैदल जा रहा तो उसको छोड़ने चला गया। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ना कभी एक ही बार होना चाहिए। भाई जब भी आपकी जरूरत कहाँ है, वो आदमी को जरूरत है और आपकी जरूरत कहाँ है, वो देख के आपको यू हैव टू डिसाइड। नहीं तो डेली आप बोलोगे सर मुझे वो 2 आदमी को छोड़ने जाना था इसलिए लेट हो गया, सर वो आदमी को मदद करना था इसलिए मैं लेट हो गया, एक भिखारी के पीछे गया इसलिए लेट हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। सो कॉन्सिक्वेंशियल इथिक्स मीन्स उसकी जरूरत, आपकी जरूरत कहां है, वो देखते हुए whenever you take that decision, it is called consequential ethics। अब तीसरा इथिक्स है, आप डेली काम कर रहे हो, यू आर प्रिंसिपल ऑफ सम बिग इंजीनियरिंग कॉलेज, आप हमारे सर हैं, हमारे दोस्त परम मित्र हमारे घोघरे सर, ही इज प्रिंसिपल ऑफ वन इंटरनेशनल लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ही इज गुड एडमिनिस्ट्रेटर, is good academician, brilliant personality, good spiritual personality, सभी कुछ है। अब डेली आते हैं, अब एक रिलीजियस फंक्शन है, वट सावित्री का फंक्शन है लेडीज ओरिएंटेड। अब एवरी डे यू हैव टू कम इन कॉलेज ड्रेस यूनिफॉर्म जो भी है, अब डेली 10 से 5 आना है, लेकिन
on Vada Savitri day or any religious function is there, then you have to leave your staff earlier, and that comes under virtue values. So दोस्तों, whenever you are working hard, even if you are perfect, कोई एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ते नहीं हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, 10 to 5 हो, whether it is पोला, whether it is नाग पंचमी, whether it is Vada Savitri, 10 to 5 college. But some administrator, good spiritual administrator, depending on that, they take that decision. So dear friends, basically whenever we are working, then there are 3 duty values. One is duty value, second one is consequential values, and third one is virtue values. Virtue values is related with ethics, संस्कार, और जो हमारी सालों से परंपरा चल रही है उसको देखते हुए हमें फॉलो करना है. सो दोस्तों, कभी कभी अब मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. मैं जिस कॉलेज में था 28 इयर्स था, लेकिन आज तक कभी भी मैं लेट नहीं गया. जब भी वहां थंब रहता था, बराबर 10:30 मेरा थंब आता था और बराबर 5 बजे जाता था. सो दैट इज कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी वैल्यूज. दोस्तों, अब हमें स्ट्रेस क्यों आता है? इफ यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज इन प्रॉपर वे, इफ यू आर फॉलोइंग इथिक्स एंड वैल्यूज इन योर लाइफ, इवन देन समटाइम वी गेट स्ट्रेस. अननेसेसरी स्ट्रेस आता है, बोलते ना हमें कुछ. व्हाई दैट स्ट्रेस इज देयर? अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंजीनियरिंग, एक हमारे from the point of view of engineering, we are having one ratio. What is stress? Achievement upon expectation. We have designed one ratio, that is achievement upon expectations. And dear friends, whenever this ratio, achievement upon expectation, if this ratio is less than 1, then we get stress. If this ratio, achievement upon expectation, is 1, no stress. And if achievement upon expectation is more than 1, all the time we are happy. Basically क्या होता है कि whenever we expect, भाई मुझे 100% मिलने वाला है 98, and whenever we expect 98% and whenever we get 70, we get stress. Whenever we expect tea, आप कहीं जाते हो and you expect tea कि मुझे चाय मिलना चाहिए और चाय नहीं मिलता, you get stress. आपने घर में सोचा कि किसने तुम्हें मेरा सुनना चाहिए और कोई सुनता नहीं, you get stress. आप बहुत काम करते हो और आपको प्राइज नहीं मिलता, you get stress. So दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है और अचीवमेंट जो मिलना है वो कम रहता है, तो अननेसेसरी आपको स्ट्रेस होता है. यार मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, यस आई एम एलिजिबल. लेकिन आप सोच रहे हो कि यू आर एलिजिबल, पर सिलेक्ट करने वाला आदमी नहीं सोच रहा कि यू आर एलिजिबल. बेसिकली व्हाट हैपेंस कि मुझे लगता है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए, यस भाई, यस आई शुड बी प्रमोटेड, मेरा ये होना चाहिए, मैं उस लेवल का हूं. सो दीज आर माय एक्सपेक्टेशंस. बट व्हाट इज अचीवमेंट? Whether I am eligible for that post from that angle, that is your achievement. So दोस्तों, ख्याल में रखिए. Why this happen? बहुत बार क्या होता है कि अननेसेसरी हम हमारा SWOT एनालिसिस बराबर नहीं करते हैं. Whether I am eligible, क्योंकि वो eligibility और ability, there are 2 criteria. Eligibility criteria and ability. Even if you are able, but if you are not technically eligible, you are gone. तो ख्याल में रखिए, there is lot of difference between eligibility and ability. तो ability कमाना हमारे हाथ में, eligible हूँ या नहीं हूँ, he will decide. Don't bother about that. The thing which is in our control, able, yes I am able professor, yeah Professor Mahadev Gaidane, I am having lot of ability. But whether Professor Mahadev Gaidane is having lot of eligibility for that post or not, they will decide. So don't bother about that. The things which are in your control, उसके बारे में सोचिए. The things which are not in your control, don't bother about that. उनको दे दीजिए टेंशन, भाई इनका क्या करना है, whether you should be promoted or not, उनको टेंशन दे दीजिए. So दोस्तों, stress is basically related with काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कंपैरिजन, स्पर्धा,
और एक्सपेक्टेशंस, आशा निराशा भी। आप जैसा आशा, यार मुझे ये चीज मिलना चाहिए, नहीं मिले यू गेट डिस्टर्ब। अब जैसे और क्या होता है कि आशा एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट है। प्राइवेट वालों का सैलरी आज 50% हो गया, इवन देन दे आर हैप्पी। हैप्पी व्हाई दे आर हैप्पी? अरे यार मेरा 1/4 नहीं हुआ, दैट इज व्हाई दे आर हैप्पी। अभी सेंट्रल का डीए बढ़ गया, स्टेट वाले दे आर डिस्टर्ब, अरे हमें कब लगेगा? सो इवन देन दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। सो दोस्तों, हैप्पीनेस इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट। तो आप पहले अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस कीजिए, अपनी बाउंड्रीज देखिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक्सपेक्टेशन से दूर हो जाइए। आप सिर्फ अपना काम कीजिए, वॉट एवर मैक्सिमम कैपेसिटी और क्वालिटी यू आर हैविंग, यू स्टिक अप टू दैट। जब मिलने की चीज रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं मिलेगी, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो आपका 100% स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाता है। आप मिनिमाइज यूर एक्सपेक्टेशंस, आपके एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए। और बोलते ना, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त कर्म। काम करते जाइए, कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा। सो इट मिनिमाइजेस स्ट्रेस। अब दोस्तों, व्हाट आर द वेरियस टूल्स टू मिनिमाइज आवर स्ट्रेस? अब हर एक को स्ट्रेस आता है। अब जैसे मुझे आज घोगवे सर ने बताया था कि सर आपका लेक्चर है, आपको भाषण देने आना है। अभी तक बहुत कुछ हर जगह मैंने भाषण दिया था, देता ही रहता हूँ, लेकिन सर ने कहा कि सर हाँ, हमारे एसटीटीपी में बहुत ब्रिलियंट लोग आने वाले हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जनरली ब्रिलियंट रहती ही है, कंफर्म। ओके, और ये बैच में बोले पूरे 1000 लोग हैं। तो मैं 4 दिन से कंटिन्यूस पढ़ता था, प्रैक्टिस भी किया। ओके, तो सर एम आई ऑडिबल? सर सुनाई दे रहा है? सर यस यस सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, हाँ वो जरा हाँ स्माइलिंग फेस दिखाते जाइए। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थोड़ा स्माइल करते जाइए। ओके, ये क्लास में लड़के नहीं है, एकदम सो जाते बेचारे। हाँ चलो। सो दोस्तों, नाउ विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस टूल्स रिलेटेड टू स्ट्रेस मिनिमाइजेशन। एक मैं आपको 2-3 स्टोरी बता दूंगा, वहां से आपको पता चलेगा। कभी कभी हमें लगता है एक कोरोना आ गया, सर्विस मेरी चली गई तो क्या होगा, यार मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यार कैसा होगा। तो एक आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, 2 स्टोरी बताऊंगा, देन वहां से आप बहुत सारा इन्फ्लुएंस निकाल सकते हो। एक नावाड़ी था, नावाड़ी मीन्स जो ड्राइविंग, जो नाव चलाता है, नावाड़ी। एक नाव चलाता था, अपना वही काम करता था रेगुलर, ही वॉज एक्सपर्ट। वो बी था बेचारा, और उसने एक मोटर, स्टेपर मोटर लगाई थी अपने नाव को, और मोटर लेके चलाता था, ही वॉज ड्राइविंग। ओके, चलता था। अब एक बार क्या हुआ, वो नाव में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आदमी बैठ गया, डबल पीएचडी, 3-4 पीएचडी थे, बहुत सारे पेटेंट थे। ओके, बहुत बैठ गया, होशियार था, ब्रिलियंट था। अब बैठने के बाद वो बेचारा नावाड़ी नाव चलाता था चलाता था चलाता था, तो आधे में गया। वो जो साइंटिस्ट था उसको लगा कि कुछ तो भी पूछना चाहिए, आई शुड आस्क, आई शुड शो हाउ ब्रिलियंट एम आई। तो उसने पूछा, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच दिस नाव वर्क्स? कौन सा प्रिंसिपल है बोले कि जिसके ऊपर नाव चलती है? ओ ड्राइवर था नावाड़ी। सर बोले, आई डोंट नो यार, बट आई नो हाउ टू ड्राइव। बोले आपका 25% लाइफ चला गया। लेकिन वो बेचारा, वो जो नावाड़ी था, उसने अपना सेमिनार किया था, ये एसटीटीपी का सेमिनार किया था, तो उसको मालूम था शांत रहना भाई, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा टेंशन लेना नहीं, तो वो ड्राइविंग करता था। फिर कुछ वक्त जाने के बाद वो साइंटिस्ट को लगा कि कुछ तो पूछना चाहिए उसने। फिर से पूछा, हैव यू टेकन पेटेंट फॉर दिस ड्राइविंग स्किल? वो लड़का बोले, यार नहीं सर। बोले आपका 50% लाइफ चला गया, बोले कुछ नहीं कर सकते बोले जिंदगी में आपने, मीनिंग बोले आपका लाइफ। तो लड़का बेचारा फिर से वो एसटीटीपी किया था, शांत था, वो अपना ड्राइव करता रहा, स्ट्रेस नहीं बढ़ने दिया, चलता था, कर्मयोगी था, चल रहा। फिर नाव चलती गई चलती गई चलती गई। फिर वो जो स्मार्ट साइंटिस्ट था उसको लगा, यार कुछ भी पूछना चाहिए रिसर्च के बारे में। फिर उसने पूछा, ओ यार, हैव यू डन दिस, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस नाउ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग? तो बोले सर मुझे मालूम नहीं यार। तो बोले आपका 75% लाइफ चला गया। ओके, लड़का चला रहा था, बिल्कुल स्पिरिचुअल था बेचारा, कुछ नहीं बोलता था, स्ट्रेस नहीं था, कुछ नहीं, अपने ड्यूटी वैल्यूज से चला रहा था। अब क्या हो गया बीच में,
वो कोरोना का सीजन था और बहुत बड़ा बादल आ गया, तोयते आ गया, और जो अभी कोकण पे आया था ना, जोरदार तोयते आ गया। 160 किलोमीटर पर आवर्स का विंड फ्लो होने लग गया, नौका डूबने लग गई और इधर उधर होने लग गई। अब नौका जब डूबने लग गई और ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया और वो कोरोना का काल था, तो लड़के ने पूछा, सर सैल्यूट टू योर ब्रिलियंसी, सर सैल्यूट टू योर अचीवमेंट, सर डू यू नो स्विमिंग, सर डू यू नो द स्किल ऑफ स्विमिंग। वो आदमी बोले नो। ओ सर बोले आपका 100% लाइफ चला गया, बोले नौका डूब गई, वो बहुत यानी वो जो साइंटिस्ट डूब गए, लड़का बच गया। सो दोस्तों, इस छोटे से स्टोरी से हमें क्या पढ़ना है? एक, whatever may be the changes in life, we should be able to fight against those changes and we should be ready to survive. कोरोना आए, कुछ भी होए, whatever may be changes, हमने वो सिस्टम के साथ लड़ने की नया नया स्किल डेवलप करना चाहिए। अभी आपने कोरोना ने क्या दिखा दिया भाई, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ना चाहिए। एक वक्त था आप लड़कों को बोलते थे मोबाइल मत लेके आओ, अब एक ऐसा वक्त है यार, डेवलप दिस कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल। मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने भी डेवलप कर दिया। सो दोस्तों, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यू शुड बी एबल टू चेंज यूर गियर्स। यदि गलती से आपकी नौकरी जाती है भाई, गलती से, क्योंकि गवर्नमेंट में चांसेस, कंटिन्यू। हाँ, सो डियर फ्रेंड्स, so this story tells us that we should be able to change our gears as per the requirement and environment. So you have to develop your skill, and that is the basic philosophy. So if we want to minimize our stress level, what are the various changes to be adopted in your body? First, market survey. What is going on? What will happen tomorrow? What will be the requirement of this era, corona era? And depending on that, you make particular changes in your skill. That is the first point. Then second, updating your knowledge as per the requirement. Whatever knowledge presently you are having, you should update your knowledge as per that X. उसको हम धार लगाते हैं, ओके, अपडेटिंग योर नॉलेज। एंड थर्ड पॉइंट इज, दैट इज पंक्चुअलिटी। सो डियर फ्रेंड्स, इफ you improve these 3 points, then there will be no stress. Now second point, to minimize your stress, that is spiritual line. What is that? Generally, why we are having this stress? Oh yeah, what will happen to me? Then whether it will happen for me or not, like this. So first is, develop the concept of that faith on God. Some big boss is there who has created this complete environment. He runs this complete system, and if we are having faith on that big boss, then 99% problems are minimized. That is why in Bhagavad Gita it is said, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. So big boss is there, God is there, creator is there. He has created this world and he is taking our care. So so maximum problems are to be given to him. Just you perform your duty, and that is the concept of faith. So dear friends, again it is observed that if we are having faith on God, then our faith on God means it is not inactiveness. You perform your duty and keep aside all problems to be solved by big boss, and complete faith, it gives rise to 100% satisfaction to you. Second point, that is confidence. Confidence minimizes your stress. You develop this concept of confidence. Yes, I can do it. Yes, I am big boss.
Yes, anything can be done by me if it is within my limits and boundaries. That is the concept of confidence. It is said, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So dear friends, that confidence we have to develop, and if that confidence is there, then automatically stress level decreases. Yes, I can do it. Yes, good things will be delivered by me, and if you are that confidence, then automatically stress level decreases. There is no concept of stress. Then third parameter, that is no comparison, no spardha, no competition, and if these are the 3 points, and fourth one is concept of gratitude. Oh God, you are great. I am very much thankful to you. I am very much thankful to you for whatever you have been given to me. I am very much thankful to you. Once you develop this concept of gratitude, then automatically your stress level decreases. So again, we will revise various tools. One is that is updating your knowledge, then complete market survey, then developing any skill for your survival, and spiritual side, that is faith, confidence, gratitude, and if you develop this side and this side, so complete equilibrium is there, and as per my experience, their stress concept or stress word does not appear in our mind. Now then, concept of spirituality, the third path, and for that, that is the excellent path, that is Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga means 8 steps to become complete spiritual. 8 steps, that means Ashtanga Yoga. Patanjali Rishi, Yogi Patanjali, he has explained this Ashtanga Yoga, which is combination of 8 steps, that is Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. Basically, what is Yam? Yam means human relations or personal relations, ethics and values. Satya, Ahimsa, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. Truth, Ahimsa means no killing. Satya, Ahimsa, Asteya means चोरी नहीं करना. Satya, Ahimsa, Asteya, Brahmacharya means everyone knows what is Brahmacharya. Aparigraha means no storage. These are the 5 human related ethics and values for our human relationship. So dear friends, if you follow these 5 ethics and values, then there is no stress. That is Satya, Ahimsa, Asteya, Brahmacharya and Aparigraha. And then personal level, because there will be question on this, and from personal level, that is Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. So Niyam is related to ethics and values, personal development. Shauch, Santosh, Tap, Swadhyay, Ishwar, Pranidhan. Santosh, contentment, going towards God, and these are the various parameters related to your internal happiness. That is Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. So aim is related to ethics and values, related to human relations. Niyam is related to ethics and values for personal internal development. Dear friends, after this, again there are various tools. Now, because for 15 minutes we will have some question answer session, and in that session I will try my best to clear all the points. Before that, we will have some breathing demonstrations, 1 or 2 related to stress minimization, 2 or 3 breathing demonstrations, and 1 demonstration related to your body posture for engineers
to perform daily. So now I will have one demonstration related to breathing exercises, which minimizes your stress. It has been technically proved. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. अरे भाई, am I audible? Yes, sir. हाँ, सुने दे. हाँ, sir. चलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो चलो भाई. हाँ, चलो भाई, बोलते जाओ जरा. So, dear friends, pranayam means breathing exercises. It has been technically proved that breathing exercises generate more oxygen. That means whenever we inhale, so during that process, oxygen is taken inside and there is some mechanism so that CO2 comes out. And if we perform this process technically, I will send 2 or 3 videos. I am having good videos related to pranayam, that is Omkar Jap, then deep breathing and various asanas. Good 3 videos designed technically. Okay, because basically I am yoga teacher and naturopath along with this electrical engineering concept. So dear friends, first we will perform that is called deep breathing. And what happens whenever we perform this deep breathing, whenever we inhale and exhale process is done in proper way, having particular proportion, what happens? Your oxygen level increases. Okay, your lungs get sufficient oxygen. Oxygen means energy to every cell, and our body is made from various cells, and each and every cell is powerhouse of our body. So deep breathing, and what happens? In our head, we are having various glands are there. All these glands, they get energized. They are energized and they are relaxed. They feel okay, and there is no concept of stress. Baki hum, if you are very much interested, we can discuss complete anatomy about various glands. So here we are having pituitary glands. Here we are having pineal glands. All these glands, they are excited. It is just like excitation provided to your generator. Whenever that DC excitation is provided to your generator, then and then that generator gives you voltage. Okay, and that is the concept of this breathing technique. So deep breathing. So technically, everyone can perform this deep breathing. You have to sit like this. Whenever your posture is like this, what happens? If we study the complete anatomy of your body, that means here you are having 7 generating stations in your body: Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahata, Vishuddha, Ajna, and then Sahasrara. These are the 7 generating power plants in our body. So whenever you sit in this posture, we are having vertebral column, backside, we are having vertebral column. That vertebral column means maximum cables, connecting cable, motoring action cable, sensoring cables. All these cables are going through your body from backside, head to this up to particular point. And what happens? Whenever we perform this deep breathing, then all these energy centers are properly excited. And that is why yogi says, all yogis, oh, it is Kundalini excitation. We will not bother about that. We will say energization of our power centers or energy centers in our body. So deep breathing. So now you have to sit like that. This is particular mudra. Whenever you sit in this mudra, what happens? Maximum blood circulation is there throughout your body. Whenever you sit in this position, this is called Sukhasana. Simple asana. Anybody can sit in this posture. Right angle, like this, straight forward, chest upward, stomach inside, normal position, and this is called Sukhasana.
Now, like this, you just concentrate at the tip of your nose. You just concentrate at the tip of your nose. Take, breathe in 1. Now you have to breathe in 5 counts and then exhale 10 counts. That ratio is to maintain. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That means you have to inhale 5 counts and you have to exhale 10 counts. So that ratio is to be maintained as 1:2. What happens? Now, just see my demonstration. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Dear friends, this inhaling and exhaling process is to be done. If this is in 5 counts, then exhaling process is to be done in 10 counts. And inhale, exhale, 1 cycle like this you have to perform as per your capacity and staying 10 cycles like this. Dear friends, it is complete study of deep breathing was done by me technically since last so many years from B second year. I am follower of yoga. Recently, I am yoga teacher, naturopath. I have taken various results. पढ़ाई भी मैं अच्छा करता हूँ, मेरिट भी हूँ. And it is observed that I am having 1 oximeter. Various results were taken, and it is my request to you. I am expert gymnast. It is my request to you. If you perform this deep breathing minimum for 5 minutes, your stress, there is no concept of stress. You are full of oxygen. Whatever CO2 is there, that maximum CO2 is out. And now there is question, why this ratio is to be maintained? 1:2. Why not 1:1? Why not 1:4? Because that anatomy process which takes place in our body, in lungs, that is inhaling of oxygen, that oxygen is being absorbed by our blood, and then whatever CO2 is there, that comes out, and that process requires particular time. Various results were performed by me at our yoga center, and it is proved that I am having that video. I will send that video. It is proved that if you do deep breathing with this technique, then your oxygen level increases, your pulse rate becomes normal, and throughout day you feel energetic. Yes, I can survive up to 100 years. I can survive up to 100 years. Then you don't feel any fear about corona. And if you don't feel any fear about corona, that means you are stress free. So dear friends, this is one technique related to your deep breathing. Madam, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. हाँ बता दीजिए बीच बीच में बता दीजिए. चलो, now this is one technique. So deep breathing minimizes your stress because you are full of oxygen. Your oxygen level increases. We have designed one video. I will send that video to everybody. That is deep breathing. Then next,
Next, that is, we will say particular word job. Dear friends, again, you have to sit in this posture. This is Sukhasana. Yadi, if it is possible for you, try this. It should be that everyone should be able to sit in this position. This is called Sukhasana. Sukhasana में सभी को आना चाहिए. And this is called Padmasana. It is somewhat difficult, but don't try for this. But Sukhasana, it is very, very easy asana, posture. Again, we will say Omkar Jap. Particular words Jap. Why Omkar? Again, various experiments were performed and various words are there. And from this, after lot of study, it was observed that whenever you create that word, combination of a, u and ma, because here you are having throat, here you are having thyroid gland, here you are having that swara yantra, and whenever you create particular sound there, that sound creates vibration. Those vibrations, they travel, and whatever stress is there in your head, mind, it becomes zero. So here, after that, we will not use any word related to stress. We will say you get that ananda, atma or paramatma ka milan. We will talk in this term. Okay. So now you have to sit like this. Then this is particular mudra. You have to sit straight. चेस्ट थोड़ी सी सामने, ऐसा नहीं बैठना है, स्ट्रेट बैठना है. दिस टाइप ऑफ मुद्रा. देन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ, उ, म. अ 2 seconds, उ 3 seconds, म 5 seconds. So total 10 seconds. So first you have to breathe in, and whenever you are exhaling, breathe जब बाहर करते हो, inhale, और whenever you are exhaling, you have to say oh, 2 seconds, u 3 seconds, ma 5 seconds. So it becomes one cycle. Up, you just observe my presentation. Breathe in. Stop. 10 seconds. A 2 seconds, U 3 seconds, Ma 5 seconds. So combination of 10 seconds. First you have to inhale, then microsecond you stop, then exhale and create this sound. Again, second cycle. Breathe in. Small breathing. ज़्यादा नहीं लेना है घड़ी. ऐसा नहीं लेना है. Small breathing. In. Exhale. 'Dear friends, again I have designed one video. I will send that video to you. Again, various experiments were taken, various experiments were performed, and it is observed that whenever you carry this Omkar chanting for minimum 5 minutes or 10 minutes, so your oxygen level increases. If initially it is 96, it becomes 98, 99, and your pulse rate also decreases. Again, these two exercises after COVID also,
We have tested this on so many patients, and it is observed that deep breathing and Omkar Jap is not related with any religion. These are your three simple words, and these three simple words create lot of vibrations, just like propagation of traveling waves on transmission line. Those traveling waves, whenever any disturbance on traveling line occurs, a propagation, traveling waves are created. Those traveling waves travels, they then reflects back, and in that case way, that hammering sound, just like in power plant, that hammering is observed, and because of that additional oxygen is created and sometimes nitric oxide. So Omkar Jap, best exercise, best breathing exercise I have observed. Not to do anything, we have to just sit here morning and evening 5 minutes, and after that lot of concentration. What happens? Whenever you create that sound, all your sensors, naak, kaan, aanखें, जीभ, त्वचा, they are concentrated at one point. वही रहते हैं. हमारे मन में कुछ भी नहीं आता है. No engineering college, no classroom, no coach, and complete concentration is there, and that is why complete concentration, creation of oxygen, lungs capacity हमारी बढ़ती है, blood circulation increases, and that mission statement that I want to live up to 100 years, yes, it justifies. So दोस्तों, now it is 2:15. Okay, चलो. So one is automatically these are the two basic exercises related to your breathing to minimize your stress. What is again stress? 99% stress is your psychosomatic condition. हम अपने मन में कुछ तो भी सोचते रहते हैं और you create that, and that is that. हाँ, अभी नेक्स्ट. अरे भाई कोई है सुनने वाला? Anybody on screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good going, sir. हाँ मैडम बी देयर. अदरवाइज मुझे स्टूडेंट, हाँ वो मुझे स्टूडेंट दिखा नहीं तो मजे नहीं आती क्लास में. और जब Yes, तक it is a स्टूडेंट request to all to on your so now cameras, there are the please. two important tools. हाँ भैया चलो भैया, मजा आती, जरा इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेक्शन होता है और जरा थोड़ा सा मजा आती. अरे वाह, वेरी गुड. चलो भाई, बढ़िया बढ़िया. नमस्कार टू ऑल. दोज आर लाइव ऑन वीडियो, बिकॉज आजकल वीडियो पे आना दैट इज ग्रेट अचीवमेंट. हर जगह वेन एवर यू ज्वाइन एनी वेबिनार, वहां से रिक्वेस्ट आती है, अरे ये स्विच ऑन योर वीडियोस. तो सबसे पहले मैं करता हूं अपना वीडियो ऑन. चलो भाई सुनाओ. फर्स्ट इज डीप ब्रीथिंग. Second one is, again I am having that video, technical design video. And third one, anybody can do. If it is possible, anybody can do. That means if it is possible for you, and if your body posture allows you to sit in Vajrasana, this is Vajrasana position. What happens? Whenever you sit in this position, maximum problems to pelvic region of your body, because here you are having two powerhouses, Muladhara, Swadhisthana, Manipur, Anahat, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. These are the power stations in our body. And what happens? All these problems, whenever you sit like this, sciatica problem is minimized. And once you are able to sit, if you are not able to sit, don't try. But if you are able to sit, what happens? Maximum problems related to this, that is sciatica, blood circulation stoppage, they are minimized. And here also, one or two simple steps. Generally, there are various pathies, that Sahaj Yoga, Art of Living,
this and that. I have attended, participated everywhere. And from that, simple Bhastrika, that is called Bhastrika, you have to do. In, out, in, out, in, out. 5 बार करना है. You have to repeat this 5 times. And again, it is observed that बाद में आपको improve करना है, बाद में बढ़ाना है, under the able guidance of any big boss. But your again oxygen level increases. There is no concept of stress. You are near to God. No stress, no kuch, no asha, no nirasha, no expectations, because Corona has proved that if you are able to maintain your breathing, then you are okay. Otherwise, zero. So, all these exercises are related to your breathing. Breathing means maximum oxidation. Breathing means exhaling of your CO2, means no stress, no any problem, and all the time you are enjoying your life, because pranayam, pranavayu, and blood circulation, these are the 2 important things in our life. And if you are able to maintain this, then you are successful. Otherwise, meaningless. Because what happens? Many times there is news. Oh, yeah, like so and so, professor, smart, handsome, dynamic professor, he died at the age of 63, and he leaves behind good wife and so many friends to take care of. ऐसी न्यूज नहीं आना चाहिए. क्या होता है? Whatever success we achieve, for that, and for that, your body plays very important role. Body is a medium, and if you are not able to maintain your body, you are gone. Success, happiness, overall swasthya, and for that you require basic oxygen, you require blood circulation, and for that you require 5 nutrients. You just calculate whether you are having 5 nutrients in your ahar. Achar, vichar, vyavhar, ahar, and vihar. So whenever we talk about our diet, 5 nutrients should be there, whether you eat proper carbohydrates or not. You prepare one list. We are expert in engineering. Yes, we know all the subjects. Electrical engineering, electrical machine design, power electronics, facts, high voltage engineering, this and that, various types of machines. We are expert in that. But if anybody asks you, oh, you are very brilliant engineer, what are various carbohydrates? What is the intake of your carbohydrates? Whether carbohydrates are there in your diet or not. So one is carbohydrates. You just go to home and prepare this list. Abhi aap ghar mein ho. Second one is proteins. Whether our intake of protein is proper or not. Third one is fat. Whether we are crossing level of fat or whether we are taking less fat, because fat is also required to maintain flexibility of your body. Then proper vitamins, whether we are having proper intake of vitamins or not. Water soluble vitamins and fat soluble vitamins. Vitamin C, vitamin K, vitamin A, vitamin B complex. Then minerals, whether we are having proper hemoglobin, that means iron or not. Because again it is observed that engineering field, again ladies, Indian ladies, we are having that problem of low hemoglobin. So even if you are excellent engineer, no problem. You are excellent achiever, no problem. But if you are unable to maintain your health, and if anybody is saying excellent engineer, so sir, I am very international level, I am having so many patents, I am this, I will ask, okay, stop.
Are you maintaining your oxygen? No, you are gone. Are you maintaining your hemoglobin? No, you are gone. Are you maintaining 5 nutrients in your hour? You are gone. Then what is the use of this? Because if you are not able to maintain your health up, you cannot become good parents also. So if you want to become good parents, then you have to maintain your good health. So dear friends, and along with that, then Dhyan. Dhyan again plays very important role in minimizing your stress. Omkar jap, deep breathing, then Vajrasan sitting, and Dhyan. Basically, what is Dhyan? If you understand this Dhyan, what is Dhyan? Dhyan, it is combination of everything. Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. Because whenever you go in Dhyan, what happens? You concentrate on particular point. And whenever you concentrate on particular point, automatically you are not thinking of remaining points. So whenever I concentrate on particular point, what is the meaning of that? You are not bothering about all other points, and your man, buddhi, ahankar and chitta, they are concentrated at particular point and you feel relaxed. And generally what happens? Whenever, pardon? Hello? Any question? Hello? Any question? Nothing, sir. You can continue. Nothing, sir. Acha. So basically, if you develop this habit of going in Dhyan, minimum for 10 minutes, whatever may be the type of Dhyan, there are various types of Dhyan prakriyas. Don't bother about that. But basically, what is Dhyan? Concentrating of your Dhyanendriyas at particular point, not thinking of other points and remaining there for 10 minutes. Oh God, you are great. And that is Dhyan. And dear friends, again it is observed that during Dhyan Prakriya, if you give command to your various glands, and that is that auto coding, auto suggestion, मैं जिंदगी का पूरे world ka I am the strongest person in the world, like that. That is giving some commands. Chalo, ready. So now again we will repeat, revise. Morning, make your schedule. Deep breathing. Then Omkar jap. 5 to 6 Basrika. Then Dhyan. And after that, if you are very much interested in having some asanas, 1 or 2 basic asanas. एक आसन है सबसे अच्छा है, once you practice it, that is Ardha Matsyendrasan, like that. So you have to twist your body like this side, then like this. So your Ardha Matsyendrasan improves the flexibility of your body, blood circulation, and along with that, your lungs capacity also increases. So dear friends, we are having various asanas related to that. And again, it is my experience that yogasanas, yoga, Dhyan Prakriya, breathing exercises, they are very, very helpful for improving our overall personality. Blood circulation increases, oxygen level increases, all our glands are energized, and all the time we are energetic. So dear friends, presently we will give some stop for this. Now there will be
question answer session, because what happens, I can continue. Ashtanga Yoga is there, then Arya Ashtangik Marga is there, various paths are there, but unless and until what is requirement and what is needed for you, you have to ask me questions. I will try my best. Chalo bhai, you have to ask me questions. Asking questions, it is compulsory. Huh? Anybody? I want minimum 20 questions. Good afternoon, sir. Minimum 20 questions. हाँ, good afternoon. नाम बताइए आपका, चलते जाइए. Good afternoon. I Dr. Namru Joshi from Dhule, SVKM Institute of Technology. हाँ. Sir, my question is, okay, sir. after a very hectic day, how we can, what type of dhyan we should do? After that, we will get relaxed, completely relaxed, and we can start a new day, we can say, from the evening after reaching the home. So what kind of dhyan we should do, sir? Sir, my mobile number is, hello sir, my mobile number is, yes, 8446185409. Yes, sir. My 85 461 Sir, your voice is breaking, sir. Mahadev Gaidhane. Okay. My name is Professor Mahadev Gaidhane. Yes, sir. Sir, your voice is breaking. Yes. Anyone from the organizing team, if you post sir's contact number in the chat window, then it will be more convenient. Sure, sir. We will share. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, it was am a I very audible? nice session, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Yes, sir. You are audible. Acha, now am I audible? हाँ, चलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Professor Mahadev Gaidhane 8446185409. Okay, sir. Okay, sir. As per your requirement, what happens? Morning में आप कॉलेज से जा रहे हो 6 p.m. So after 6 yes, sir. At 6 p.m. you are reaching at your, okay? And now there you want yes, 15 to 20 minutes relaxation kriyas for that. That is relaxation yes, and energization kriyas. So during that yes, time, sir. evening time, 15 to 20 minutes. One is Sukshma Vyayam. It is called Sukshma Vyayam Kriya. Small various micro kriyas like this. One kriya is this. Yes, so your joints are clear. Blood circulation because gets maximized. And second one is that is called one Sukshma Kriya. Second one is like this. Because what happens through this your neck, complete cable of your commanding cable from your head to your body, it is going. Okay, all sensory points or all motoring points, cables are there. That is why flexibility is required. And after that, you just sit in Sukhasana. अब मैं आपको 5 मिनट be ready for ध्यान. 5 minutes ध्यान. सब जन बैठ जाइए. Everyone will be sitting in Sukhasana. जी सर. Sit in Sukhasana. Everybody will sit in Sukhasana. 5 minutes. Will perform that 5 minutes ध्यान. Everyone has to listen my commands. जो भी commands मैं दे रहा हूँ, you have to concentrate on those commands. Close your eyes. Sit in Sukhasana. Sit in Sukhasana. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Complete concentrate on my commands. Complete concentration is required towards my commands. Whatever commands will be given by me, you concentrate on those commands. Concentrate on those commands. Come at the tip of your nose. You are sitting in state. State बैठिए. Be straight. Right angle. Be straight. Nose आपका straight. सामने देख रहे हो. आंखें बंद. Eyes are closed. Concentrate at the tip of your nose. Concentrate at the tip of your nose.
Concentrate at the tip of your nose. Whatever breathing is going on, you don't control it. Let it happen as it is. Whatever breathing is going on, you don't control it. Let it happen as it is. Breathing चल रहा है, breathing चल रही है. You just enjoy that. You just enjoy your breathing as third party umpire. You don't control it. Be at the tip of your nose. Observe your breathing. Observe your breathing. Whatever breathing is going on, you just observe that as third party umpire. You don't control it. Be there. Be away from all tensions. Be away from all tensions. Release all tensions. Be away from all stress. You are enjoying there. Yes. Be there. Be there. Be there at the tip of your nose. Now we will chant Omkar Jap 3 times. We will chant Omkar Jap 3 times along with me. We will chant Omkar Jap 3 times along with me. You visualize your God in front of your nose. You visualize your God on whom you are having faith in front of your nose. We will chant Omkar Jap 3 times. Start. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. शांत हो गए हो आप. रिलैक्स. You are full of energy, power, protection. We are full of energy, power, protection. We are full of energy, power, protection. Shant, shant. Now you are in thoughtless awareness condition. Relaxation में जाइए. Relaxation में जाइए. Relaxation में जाइए. Now you are traveling towards गहरी योग निद्रा. Deep नींद में जा रहे हैं आप. Now you are traveling towards deep sleep. गहरी योग निद्रा में जा रहे हो. शांत हो जाइए. शांत शांत शांत. थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट में आइए. शांत 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 धीरे धीरे सजग हो जाइए. धीरे धीरे सजग हो जाइए. जहां बैठे हो वहां आइए. wherever you are sitting, you just come back. सजग हो जाइए. सजग हो जाइए. जहां हो वहां आ जाइए. सजग हो जाइए. धीरे धीरे आंखें खोलिए. धीरे धीरे आंखें खोलिए. Sir, your voice is not audible, sir. Yes. Mic is mute. So please, अरे please unmute. अरे यार. For just Last 2-3 में, last seconds. अरे Yes, sir. Yes. अरे यार अभी अभी. अरे यार. No, sir, only just Rest for is 5 okay. seconds Sir, it was. just muted. अगले बार. In this way. चलो. In this way, there are. Sir, again it is mute. Again it is mute. अरे यार फिर से गए. Yeah. अरे It is यार, okay now. चलो अभी. Yeah, it is okay. हाँ चलो. हाँ ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ चलो. thank you, sir. Thank you very much, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. Thank you, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एनीबॉडी? अरे क्वेश्चन पूछते जाइए, क्लास में क्वेश्चन नहीं है तो मजे नहीं. हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, anyone wants to ask queries or doubts about ethics, yoga, and stress? अरे मिनिमम 10 क्वेश्चंस, वी रिक्वायर मिनिमम 10 क्वेश्चन, otherwise Anybody wants to ask questions on college. Anybody wants to ask questions on ethics, yoga, and stress management? So how to get rid of negative thoughts? Pardon, madam? How to overcome negative thoughts? Negative thoughts. आप जरा वीडियो ऑन कीजिए ना, वीडियो ऑन कीजिए. आपका कहाँ से हो, क्या है नाम बताइए. Please on your video, ma'am. Lakshmi ma'am, please on your video. Otherwise there is no communication. Madam, actually mind is full of positive and negative of thoughts, okay? But generally what happens, you have to start thinking positive thoughts only. This is like this: मैं अच्छा हूँ, I am good, I am perfect, Yeah. I am perfect, I am good, Yeah. I can do this, I can do this. Yeah. And that is the concept of auto coding. Once you develop this concept of auto coding, what happens? Yeah. Our mind is having 4 parts. So one mind is designed only to record that. So once you start thinking like that, automatically your negative thoughts will not arrive in your mind. So that is the concept of auto coding. So during morning, Sir, you are mute, sir, once again. pray to God. Oh God, Yeah. you are great. अरे अपने आप हो जाता है यहाँ से. So it is automatically is being done. So actually you have to do request to God. Oh God, I am great. You are giving complete energy. I am powerful. And whenever you breathe in, so during that process, breathe in, energy in the form of oxygen. अरे यार पूरा ऑफ हो जाता है, मुझे हाथ लगाना पड़ेगा. So now you have to imagine like this: whenever you breathe in, energy in the form of oxygen is entering in my body. Energy in the form of oxygen and positive thoughts is entering in my body. Energy in the form of oxygen is entering in my body. And now रुकिए. I am full of positive thoughts. I am full of energy. I am full of everything. Yes, I am full of everything. I am full of prajnaशील करुणा प्रेम सद्भावना. Yes, I can do it. Yes, I can do it. Yes, I can do it. And now then, inhale. All toxins are going out. All negative thoughts are going out. All toxins are given out. All CO2 is being gone. Yes, yes. And once you develop this concept of auto coding, during your inhaling and exhaling process, automatically बुरी चीजें आती नहीं मन में. बस. And God is great. भाई why the thing? The thing which is not in your control, why to tension? आप अपना काम करो. What will happen in America? Unnecessary you are having tension. बराबर है? Oh, unnecessary, the things which are not in your control, don't bother about that. The things which are in your control, मेरा बच्चा क्या होगा, दिए लगाएगा नहीं लगाएगा, वो कैसा करेगा, don't bother about that. You just perform your duty. The question will be asked whether you have performed your duty or not, whether you have created that environment or not. And you say yes, then don't bother about that. And that is the basic philosophy of happiness. छोड़ दो सब बातें भगवान को. चलो नेक्स्ट. गुड क्वेश्चन. Thank you very much, sir. Yes, any more questions? Hello. Okay, thank you. Hello. Ma'am, am I audible? Yes, yes. You हाँ are. सर बोलिए. Yes, myself, Professor Yes, Anil yes, from एकदम. Swaris College of Engineering, Pandharpur, Maharashtra. Sir, actually, I have one question. Actually, I have 5 years of experience, and before that, I used to work as an electrical engineer in industry.
So that time I was enjoying my work, but right now I switched Ah. it to the education field. Education field. So sometimes Ah. when I will come under depression or come pressure, at that time I feel that why I chosen the education field. So in that situation, sir, how to keep myself calm position, sir? Sir, what is your name? Yeah, Your Anil. name, Anil. please? Yeah, Anil, sir. Sir, your name, please? Anil, पूरा नाम? Anil. Yes, पूरा नाम? yes, yes. Anil Arun Tekle. हाँ. अच्छा, you are from Pandharpur. Yes, sir. Yes, Pandharpur. yes, yes, sir. The place of Lord Vittala, sir. हाँ, Pandharpur. So basically, हाँ, चलो भाई. Okay, that is why salute. Basically, initially I was in electricity board for 10 years. I worked there. I enjoyed my life. I became excellent testing engineer. Wherever there was any fault in Vidarbha region, I was invited. That junior engineer, assistant engineer, Mahadev Gaidane, I was invited. I was very expert. And after that, I realized that teaching during that process, I realized that teaching is the best process in the that is profession in the world. After that, I left that job. I joined this engineering college, and here also from first day I started enjoying this teaching, and a basic philosophy, 5 laws related to art of living. If you want to be successful in life, first, accept the things as they are. Then don't try to become football of environment, but you try to become striker. बराबर है? And as per the requirement, you should be able to change your life. दुनिया के तरफ पॉजिटिव एंगल से देखो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, धारा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे, जहां भी हो. And present is inevitable. Now you cannot live. Whenever I joined electricity board, that time teacher wages were very poor. So that is why I gave preference to MSCB electricity board. After that, it was observed that teaching में अच्छी सैलरी है. I joined teaching. बाद में पता चला कि भैया यहाँ भी कम है प्राइवेट में. So I improved my skill, started earning something. So depending on requirement, you should be able to change your gears. If not, be happy. Try to get what you like and try to like what you get. जहां भी हो वहां, ऐसा बोलते हैं ना मराठी में कहावत है, देखणे ते चेहरे जे प्रांजळाचे आरसे, गोरटे की सावय मोल नहीं फारसे. आप कैसी भी हो, यस. लहरों से डरकर कभी नौका पार. अरे ऑडिबल हूं मैं कि नहीं हूं? जी, ये बंद हो जाता है आवाज. एक कहावत है, हाँ, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एक नन्ही चिट्ठी बार बार चढ़ती है, बार बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास कब रगों में साथ देता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. एक गोताखोर पानी में जाता है, बार बार ऊपर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, उसके हाथ में उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. जहां हो खुश रहो. इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू चेंज इट. तो बेसिक फिलोसॉफी है यार, भारतीय संस्कृति इसी कारण चल रही है. ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक, ट्राई टू लाइक व्हाट यू गेट. पहले जो मिलाना है अपने मन से मिलाने की कोशिश करो, उसके बाद जो मिला उसमें खुश रहो. एंड इफ यू आर हैविंग दैट एबिलिटी टू चेंज द सिस्टम, चेंज इट. इफ नॉट, लीव इट. एंजॉय इट. एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. जिंदगी में प्रेजेंट इज इनएविटेबल. अरे क्या होगा यार, अरे कोरोना चल रहा है, कैसा करना है, क्या करना है, ये सब ये सब छोड़ दीजिए. अब जहां हो अच्छा टीचर बनो. अभी ना हो, मैं पहले आई वाज सिंपल लेक्चरर, बराबर है. यस, आई वाज नोन विथ माय नेम. महादेव गायदने मशीन्स पढ़ाते, कंट्रोल सिस्टम पढ़ाते, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, हाई वोल्टेज का एक्सपर्ट बन गया मैं. नागपुर साइड में हाई वोल्टेज लैब्स वेर डिजाइन बाय मी. तो ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट इन एनी फील्ड. क्या पढ़ाते हो अभी आप सर? विच सब्जेक्ट यू आर टीचिंग? जी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स सर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स. विच सब्जेक्ट? अरे इलेक्ट्रिकल मशीन्स, उसमें बॉस बन जाओ, बट ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट इन दैट.
Be any student will ask you, oh sir, how does that rotor rotates? तो आपका बिल्कुल रहना चाहिए, whenever three phase AC supply is given to three windings wound on stator which are 120 degrees apart, revolving magnetic field is produced. That revolving magnetic field which is produced is rotating at constant speed and is having constant magnitude. That cuts rotor conductors, and as rotor conductors are shorted at both the ends, EMF is induced. बराबर है, ताकि आपका नाम चले। जय हो, जय हो। हाँ। आप कभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, प्रोफेसर महादेव गायधने 8446185409 कभी भी। आई विल से 3 गुड वीडियोस। वन इज डीप ब्रीथिंग, ओमकार जप, नेक्स्ट इज एक्सरसाइजेस। ओके, हाँ। एनीबॉडी? थैंक यू सर। क्वेश्चन है सर की तरफ, मैंने घवघवे सर की तरफ एक क्वेश्चन बैंक भेज दिए, यू हैव टू सॉल्व दैट, 10 मार्क्स है देयर। हाँ, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन पूछते जाओ बेटा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एक्टिव क्लास नहीं आएगा, मजा आएगी नहीं। हाँ, मैडम आपका क्वेश्चन? All the time your video is on. You ask any question. Sir, any specific instructions for? Question asking is. Yeah, I am asking question. Any specific instructions for the people who suffered from corona? So, including me, there may be a lot of participants who suffered from corona. Any specific instructions from your side? General question. Many. Basically, only you have to give importance to your diet. That is whether you are having that healthy diet or not. Okay, that first point is healthy diet. Second one is not over exertion. Presently, over exertion is not required. So relax, rahiye. Then 10 minutes normal breathing. Don't go for that heavy breathing. Exertion on your body. Anulom Vilom is best for after COVID persons, because I have designed that video for after COVID persons. So Anulom Vilom, good diet and positive thinking. God is great. God has created this world. Whatever God dekhega, and yada yada dharmasya, don't bother about that. Only thing is that I will try my best to maintain my प्राणवायु, बस ज्यादा सोचना नहीं, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना आदमी ने सब कुछ एक्सपीरियंस किया रहता है, so he is having lot of experience. Only thing is that मुझे अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, positive thinking, God is with me, बस। डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे कोरोना, बोलिए sir. Any more questions please? I think sir, actually we have scheduled our evaluation test after the session, so shall we conclude sir? Okay. So it was an excellent session by Professor Mahadev Gaidhane sir. Sir has discussed various ethics values by sharing very good examples and stories. Sir also discussed stress management and how to reduce stress. And sir also discussed SWOT analysis. I think everyone has to identify their strengths, weaknesses, opportunities, and threats to achieve success in life. Sir has explained various breathing exercises by actually performing exercises, which were really excellent. I hope all of you will definitely get benefited by this session. So with this, I would like to thank Professor Mahadev Gaidhane sir for having a wonderful session and sparing time for us. Thank you, sir. Thank you.